So let's sketch out the triangles of neck. See, this is the lower part of face. Okay, this is the base of mandible and this is the angle of mandible, and here I'm going to draw the mastoid process. See, this is hyoid bone, okay, in the midline, and we have a bone here which is called as the manubrium sterni in the midline. To the manubrium sterni is attached a bone, this is called as clavicle, and to the clavicle posteriorly is attached the scapula, isn't it? So now I am going to draw the muscles of the which forms the triangles of neck. First of all, there is a muscle which is running obliquely in the neck. This muscle is named as sternocleidomastoid. Why it is called as sternocleidomastoid? Because it originates from sternum, from the clavicle, and inserts onto the mastoid process. See, there is another muscle which inserts onto the mastoid process and originates from the clavicle and the scapula. It is trapezium shaped. This is called as the trapezius muscle, isn't it? Okay, so we can see there is a triangle between the sternocleidomastoid, trapezius, and the clavicle, isn't it? This triangle is called as posterior triangle. ठीक है, sternocleidomastoid के पीछे जो ट्रायंगल है उसको हम posterior triangle कहते हैं. sternocleidomastoid के आगे जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारों को मिला के हम anterior triangle बोलते हैं. And see, this is the median plane of the neck. Okay, and now we have another muscle which originates from the digastric fossa and move on to the hyoid bone and finally inserts into the mastoid process. See, this is digastric muscle. जो आगे वाली है दिस इज द एंटीरियर belly ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और जो पीछे वाली है दिस इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर belly ऑफ डाइगैस्ट्रिक. इन दोनों डाइगैस्ट्रिक के बीच में, बेस ऑफ मैंडिबल के बीच में, प्लस इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द mastoid प्रोसेस के बीच में, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल. This triangle is called as digastric triangle. It is also called as submandibular triangle. Submandibular triangle भी इसको बोलते हैं. And see, there is another muscle which originates from the hyoid bone, goes obliquely and inserts onto the scapula. This muscle is called as omohyoid muscle. Omohyoid muscle. ये muscle hyoid bone और scapula के बीच में होती है और sternocleidomastoid के नीचे से जाती है. ठीक है? And it forms another triangle like this, which is very important for MBBS. This triangle is named as carotid triangle. And there is another triangle which lies below the hyoid bone and the sternum. This triangle is the infrahyoid triangle because it lies below the hyoid bone. Hyoid bone के नीचे है, hyoid bone और sternum के बीच में है. This is infrahyoid triangle. इसका दूसरा नाम है muscular triangle क्योंकि इसमें बहुत सारी infrahyoid muscles होती हैं. ठीक है, so see this triangle this complete triangle which lies anteriorly to sternocleidomastoid, जिसमें further digastric, carotid और infrahyoid triangle है. इन पूरे को हम बोलते हैं anterior triangle. sternocleidomastoid के जो पीछे है इस triangle को हम बोलते हैं posterior triangle. So we will discuss the boundaries of each and every triangle. So let's discuss the posterior triangle. See, this muscle is called as sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid. ठीक है, and this muscle which lies posteriorly this is called as trapezius. This bone, as we all know, this is clavicle. अब इनके बीच में ये जो triangle बनता है which I am drawing with the green color, this triangle is called as the posterior triangle. So what are the boundaries of posterior triangle? Boundaries are anteriorly. आगे की तरफ कौन सी मसल है? You people know that there is sternocleidomastoid. Posteriorly पीछे की तरफ इस triangle में कौन सी मसल है? We know that there is trapezius. अच्छा, base इस triangle का किससे बनता है? Base ये वाला base है which is formed by clavicle. Okay, and where is the apex? I am marking the apex with the yellow color. See, this is the apex. Apex किससे बनता है? Apex is formed where sternocleidomastoid and trapezius they meet each other. ठीक है जी, this forms the apex. Now we can see that this whole triangle is further subdivided into two parts. एक तो ये वाला part which lies above the inferior belly of omohyoid. ये वाली जो muscle है, this muscle is called as the omohyoid muscle. This muscle is the inferior belly of omohyoid. तो इस inferior belly of omohyoid के बीच में sternocleidomastoid और trapezius के बीच में this part of the posterior triangle is called as occipital triangle, whereas the another part, ये मैं yellow से बना रहा हूँ, this part below the inferior belly of omohyoid, the sternocleidomastoid and the clavicle, this triangle is called as supraclavicular triangle, isn't it? So these are the boundaries of the posterior triangle. Now we will discuss the boundaries of anterior triangle. As we all know that anterior triangle is the one which lies anterior to sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid के आगे ये पूरा triangle from the chin to the mastoid process and to the manubrium sterni, this whole triangle is categorized as the anterior triangle.
which is further subdivided into 4 triangles. The subdivisions are submental triangle, submandibular triangle, then we have very important carotid triangle, and then we have infrahyoid or muscular triangle. Is that clear? So first of all, we will discuss the boundaries of carotid triangle. As we all know that this muscle is called as sternocleidomastoid, and this muscle is called as the posterior belly of digastric. Okay, and this small muscle, this muscle is called as superior belly of omohyoid. तो इनके बीच में ये triangle, this triangle is called as the carotid triangle. So the बेटा ये बाउंड्री है एंटीरो सुपीरियरली, ये बाउंड्री है एंटीरो इंफीरियरली, और ये पोस्टीरियर बाउंड्री. तो देयर आर 3 बाउंड्रीज एंटीरो सुपीरियरली कौन सी वाली बाउंड्री है? ये डाइगैस्ट्रिक वाली. इट इज फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर belly of digastric. Okay, अब एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री ये वाली है, दिस इज एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री. इट इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर belly of omohyoid, and you all know that this lies posteriorly. This is the posterior boundary. It is formed by sternocleidomastoid muscle. This triangle is called as carotid triangle because there are large vessels in this triangle, mainly the common carotid artery, internal carotid artery, external carotid artery, which supplies the head and neck. So this triangle is called as the carotid triangle. So now we will discuss the boundaries of submandibular triangle or digastric triangle. See, submandibular triangle है कहाँ पे? ये देखो mandible के नीचे. This is the base of mandible, and if we draw the imaginary line from the angle of mandible to the mastoid process और डाइगैस्ट्रिक के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली के बीच में, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सबमैंडिबुलर ट्रायंगल. तो इसकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज सबसे पहले बाउंड्री ये वाली बनेगी विच इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. सेकंड बाउंड्री बनेगी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. थर्ड बाउंड्री जो बनेगी वो ये बेस ऑफ मैंडिबल से बनेगी प्लस एंगल ऑफ मैंडिबल. और याद रखना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मास्टोइड प्रोसेस. So this is the third boundary, or which is also called as the base. So the boundaries are antero-inferiorly. We have anterior belly of digastric. कौन सी है anterior belly of digastric? ये ठीक है. And this is posterior-inferior boundary. This muscle is the posterior belly of digastric. And see the base. Base इसका किससे बनता है? I draw it with yellow color. Base is found by the base of mandible. Base of mandible के बाद ये angle of mandible आ जाएगा. तो इट इज फाउंड बाय द बेस ऑफ मैंडिबल प्लस इमेजिनरी लाइन. एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम एंगल ऑफ मैंडिबल और मास्टोइड प्रोसेस के बीच में टू कंप्लीट इट्स बाउंड्री. तो बेस इज फाउंड बाय बेस ऑफ मैंडिबल प्लस इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल टू मास्टोइड प्रोसेस just to complete this. और एपेक्स कहाँ बनता है? एपेक्स बनता है इसका जी हाइवाइड बोन पे. This triangle is called as the digastric triangle. Now we will discuss the muscular triangle or infrahyoid triangle. देखो infrahyoid triangle कौन सा है? ये वाला है. यहाँ पे आप लोग अभी सपोज करो खड़े. This triangle is the infrahyoid triangle. तो इसकी बाउंड्रीज देख लो. बाउंड्रीज एक तो इस मसल से बनती है, दूसरी इस मसल से बनती है, एंड थर्ड ये मीडियन लाइन ऑफ लेग से बनती है. तो द बाउंड्रीज आर superiorly, the boundaries are superiorly. ऊपर की तरफ बाउंड्री किससे बनती है? We can see that this muscle is superior belly of omohyoid. It will form the superior boundary. ये ठीक है. Second boundary is posteriorly. Posteriorly it is formed by sternocleidomastoid. I will mark the sternocleidomastoid with green color. ये is sternocleidomastoid which will form this boundary. This is the posterior boundary. ठीक है. और थर्ड बाउंड्री आई ड्रॉ इट विद पर्पल कलर. दिस इज द थर्ड बाउंड्री. दिस इज द एंटीरियर बाउंड्री, आगे की तरफ. तो एंटीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय द मीडियन प्लेन ऑफ नेक. इट फॉर्म्स द थर्ड बाउंड्री ऑफ द infrahyoid triangle or the muscular triangle. Why it is called as the muscular triangle? Because it contains muscles which are called as infrahyoid muscles. इन मसल्स के नाम बता देता हूँ. देखो ये वाली कौन सी बोन है? स्टर्नम है ना. स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम. तो बिटवीन द स्टर्नम एंड हाइवाइड बोन देयर इज अ मसल कॉल्ड एज स्टर्नोहायोइड. अब नेक में ना एक थायराइड कार्टिलेज होता है विच इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स. ठीक है. तो स्टर्नम और थायराइड कार्टिलेज के बीच में उस मसल को बोलते हैं हम स्टर्नोथायरॉइड. ठीक है. थर्ड मसल आती है थायराइड और हाइवाइड बोन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज थायरोहायोइड. एंड चौथी मसल आपको ये दिख रही है हाइवाइड की, दैट इज द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल.